Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we were discussing about the transcriptional unit. We have seen कि what are the components which are present in a transcriptional unit. तो हम लोगों ने देखा कि उसमें तीन segments होते हैं, तीन regions होते हैं. One is the promoter site, the other one is the structural gene जिससे protein formation होता है, the cistron segment, which is the functional one, and the last one is the terminator sequence, right? So in today's class, we'll discuss about the process of transcription, how actually transcription is taking place in prokaryotes. ठीक है, तो आपके कोर्स सिलेबस में प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का तो दिया नहीं है, बट यस विल डिस्कस अबाउट दैट इन ब्रीफ एज वेल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. Now there are essential components in transcription. First of the most essential component is the enzyme. What is the enzyme? Enzyme RNA polymerase. इसको हम लोग DNA dependent RNA polymerase कह रहे हैं. We are calling it because this is a molecule, this is an enzyme which will produce an RNA molecule depending on a template DNA. एक template DNA पे base करके एक mRNA molecule जिस तरह से produce होता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम है DNA dependent RNA polymerase, या फिर कभी कभी इसको ट्रांसक्रिप्टेज भी बोला जाता है. यू कैन टेक डाउन दिस नेम एज वेल. दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, तो आप लोग उसको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बोल सकते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्टेज बोल सकते हैं, बट दिस एंजाइम इज एन एपो एंजाइम या फिर कोर एंजाइम. एक्चुअली क्या होता है, इसका नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कोर एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज का, तो उसमें 4 यूनिट्स होते हैं. ठीक है, it has 2 alpha units, 1 beta unit and 1 beta dash unit. Now this is the apoenzyme which is not active. To become active it needs another factor which is called as the sigma factor. Now ये जो sigma factor है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है. जैसे ही sigma factor इसके साथ जुड़ जाएगा then it becomes a holoenzyme which is the active enzyme. Okay, so for the binding to the promoter sequence sigma factor is necessary. Without sigma factor it cannot function. तो इसीलिए जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज वो कोर एंजाइम या फिर एपो एंजाइम होता है. इट बाइंड्स विद सिग्मा फैक्टर व्हिच इज अ कोएंजाइम एंड देन इट बिकम्स एक्टिवेटेड टू फॉर्म द होलो एंजाइम. ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट एज आई टोल्ड यू इट इज द इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर. उसको इनिशिएशन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिग्मा बाइंड होने के बाद ही पहला स्टेप जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन, वो कैरी आउट होता है. नाउ सिमिलरली टुवर्ड्स द एंड जो हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस है, वहां पे रिलीज करने के लिए, आरएनए को डीएनए से रिलीज करने के लिए, अलग करने के लिए, देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन फैक्टर, कॉमनली नोन एज रो फैक्टर. ठीक है, सो दिस रो फैक्टर विल बाइंड विद द एंजाइम that is your RNA polymerase and it will detach the enzyme from the DNA and separate out the newly formed mRNA strand. So this is also necessary for the mechanism of transcription. Besides that हम लोग जानते ही हैं कि अब हमें एक नया RNA बनाना है, तो RNA बनाने के लिए हमें building blocks चाहिए. So the building blocks to make RNA is ribonucleoside triphosphate that comes in the form of ATP, GTP, CTP and UTP. हम RNA बना रहे हैं तो यहाँ पे थायमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा, so it will be UTP. Okay, and based on the DNA we are forming an RNA. तो keeping that in mind we will need a template DNA. अब ये template DNA हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. One strand is called as coding strand, the other is called as non-coding strand. The non-coding strand actually acts as the template DNA. उसी के ऊपर बेस करके RNA molecule form होता है. So these are the components necessary for the process of transcription. Let's move to the next slide. Now the total process of transcription involves 3 steps. उसके 3 steps होते हैं. क्या क्या होते हैं? Initiation, elongation, termination. So there are 3 steps in the process of transcription: initiation, elongation, termination. Okay. Now this is how it takes place. This diagram students you will find in your book as well. ये आपका NCERT book में ही है. So I'll explain the steps one by one. इसके बाद हम इसका descriptions देख लेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेप जो होता है आपका इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा. द सिग्मा फैक्टर विल बाइंड टू द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू होलो एंजाइम.
जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा। ना दैट विल बाइंड टू द प्रोमोटर सीक्वेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन येलो हियर। तो वो प्रोमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा एंड इट विल ओपन अप द डीएनए। ठीक है, सो डीएनए का जो डबल हेलिक है उसको वो खोल देगा, इट विल ओपन द डीएनए फॉर्मिंग इट। ओके, सो इट विल ओपन अप द डीएनए फॉर्मिंग ए ट्रांसक्रिप्शन बबल। एक ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होगा, ये उसको खोल के उसके बीच में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको वो तोड़ देगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज इनिशिएशन। नाउ द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज elongation. So during elongation, what is actually happening? Now this RNA polymerase will release the sigma factor. वो sigma factor को release कर देगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और along the DNA strand it will start to synthesize an RNA strand. मतलब DNA का जो टेम्पलेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो एक RNA बनाने लगेगा। मतलब इफ देर इज दिस रेड कलर स्ट्रैंड आप लोग जो देख रहे हो, इसी स्ट्रैंड से वो अपना RNA बना रहा है। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, द रेड वन. So the red strand, basing on the red strand, it will start attaching the ribonucleotides one by one. ओके, तो अगर यहाँ पे A है उसके ऑपोजिट में U ऐड करेगा, अगर यहाँ पे G है उसके ऑपोजिट में C ऐड करेगा, अगर C है G ऐड करेगा। वैसे करते करते एक RNA सीक्वेंस वो सिंथेसाइज करते जाएगा एंड विल कीप मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन फ्रॉम द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड. So this process is called as elongation. Now this step, elongation, will take place till this enzyme reaches the terminator sequence. ठीक है, now once it reaches the terminator sequence, the third step will start, that is known as termination. तो थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ था इनिशिएशन के टाइम पे, वैसे ही रो फैक्टर अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ हियर, and that will detach the enzyme from the DNA, release out the mRNA molecule, and the double stranded DNA will again become a double helical structure. वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। Thus an RNA molecule is formed from the corresponding template DNA. So this is how the process of transcription takes place in prokaryotes. So that we have mentioned here in words. उसको हमने words में mention कर दिया. I'll just read it out. Initiation. The RNA polymerase enzyme activates after binding to the sigma factor. RNA polymerase attaches to the DNA molecule and moves along the DNA strand until it recognizes a promoter sequence. The DNA double helix then unwinds and all the bases of on each of the DNA strands are exposed, forming a transcription bubble. तो ये मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन के टाइम पे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाता है. इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड कि elongation takes place. Elongation का मतलब ribonucleotides are added to the template strand of the DNA complementarily. जैसे मैंने आपको बताया, A है तो उसके corresponding में U ऐड करेगा, G है उसके corresponding में C ऐड करेगा, and so on. ठीक है, thus synthesizing a new mRNA. तो इसी तरह से वो एक नया mRNA synthesize कर लेता है. ठीक है, now once it reaches the terminator sequence, the third step will be initiated, which is termination. Termination क्या होता है? RNA polymerase encounters a terminator sequence, and there a terminator factor, which is the rho factor, will come and bind to the RNA polymerase enzyme. It will release the RNA polymerase enzyme as well as separate out the DNA template, and the mRNA will be free. Okay, so this step is called as termination. इसको हम लोग termination बोलते हैं, right? Now transcription in eukaryotes is also quite similar, लेकिन उनमें उसमें कुछ differences होते हैं. So these are the differences as you can see. Transcription in eukaryotes involve 3 different RNA polymerase enzymes. वहाँ पे 3 अलग-अलग RNA polymerase होते हैं. RNA polymerase 1, it synthesizes rRNAs, that is 28S, 8S and 5.8S. तो ये 3 टाइप का rRNA synthesize करता है. जबकि आपका RNA polymerase 2 synthesizes tRNA, 5S rRNA, SN RNA. यहाँ पे जो SN है, दिस मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर rRNA. ठीक है, तो पॉलीमरेज 2 क्या करता है, वो tRNA, 5S rRNA एंड SN rRNA सिंथेसाइज करता है. जबकि RNA पॉलीमरेज 3 जो है, दिस इज द वन रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज द प्रीकॉर्सर ऑफ mRNA, व्हिच इज कॉल्ड एज HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA. अब यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में. प्रोकैरियोट में डायरेक्टली mRNA फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पहला
RNA form होगा by the use of RNA polymerase 3, that will be HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. That means it will contain two different segments, one which are the coding sequence called as the exons, and the other which are the non-coding sequence which are commonly termed as introns. So ये हम लोग सिस्ट्रॉन जब पढ़ रहे थे तब हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए फॉर्मेशन के टाइम पे. Now what we have to do, we have to remove these introns. ये जो introns है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको हमें HNRNA से रिमूव करना है और सिर्फ फंक्शनल यूनिट्स ही रखना है. ठीक है. So that is carried out by this process called as RNA splicing. So post-transcriptional step like RNA splicing is necessary to remove introns to form the mRNA molecule. mRNA molecule form करने के लिए introns को हमें remove करना पड़ता है. ठीक है. So this is how it is different in eukaryotes, how it is different, and transcription in prokaryotes as we have previously discussed. तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा. यूकैरियोट का RNA polymerase 1 synthesizes rRNAs 28S, 8S, 5.8S. RNA polymerase 2 synthesizes tRNA, 5S RNA and snRNA, whereas RNA polymerase 3 synthesizes hnRNA, which later on after RNA splicing gets converted into the mRNA, the messenger RNA. ठीक है. Now this is how the process is actually carried out. यहाँ पे प्रोसेस आपका दिया हुआ है. तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है आपका कैपिंग. कैपिंग क्या होता है? एक मिथाइलेटेड ग्वानाइन आपका 5 प्राइम एंड के साथ जुड़ जाएगा. So that protects the 5 prime end. This is called as capping. The hnRNA which is produced after the transcription, as you can see, इसमें इंट्रॉन्स हैं जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं और एक्सॉन्स हैं जो कोडिंग सेगमेंट्स हैं. ठीक है. तो जैसे ये सिंथेसाइज होगा, the hnRNA which will be synthesized, you will find that these introns will start to form loops as it is shown here. तो ये जो loops form होंगे वो loops क्या होगा? It will be completely of the intron. Finally, these loop-like structures will be detached and will be broken down by the enzyme kinase. Kinase उसको तोड़ देगा और वो बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ एक्सॉन ही बाकी रह जाएगा. At the same time, a poly A tail is attached at the 3 prime end, जिसको हम लोग polyadenylation बोलते हैं. तो पहला स्टेप था कैपिंग, उसके बाद आ गया आपका RNA स्प्लाइसिंग, फिर तीसरा स्टेप हो गया polyadenylation. मतलब एडिनाइन ऐड करेगा. कहां पे ऐड करेगा? 3 प्राइम एंड में. देयर विल बी पोली ए टेल. मतलब ये जो ग्रीन कलर का सेगमेंट है आप यहाँ पे देखोगे ए वैसे करके पूरा कंप्लीट सीक्वेंस होगा. दिस विल बी ए, देन देयर विल बी अनदर ए, देन देयर विल बी अनदर ए एंड सो ऑन. सो दिस टोटल टेल विल बी मेड अप ऑफ ओनली ए और एडिनाइन. तो इसलिए उसको पोली एडिनाइलेशन बोला जाता है. ठीक है. At the end, you will find an mRNA will be produced after the splicing. Now, this mRNA will be having a methylated guanine at the 5 prime end and a poly A tail at the 3 prime end. Now, these two structures are present to protect the mRNA molecule from different kinds of exonuclease enzymes. तो exonuclease enzyme से इसको protect करने के लिए ये दोनों ends form होते हैं. ठीक है. So students, this is about the process of transcription in prokaryotes, and we have also seen what are the differences that is seen in case of eukaryotic transcription, as well as we have also mentioned that after the hnRNA is formed there are certain steps to remove the introns, which is generally referred to as RNA splicing. In the next class we will move on to the genetic code and then we'll discuss about the process of translation. Thank you everyone.